Hello everybody. Welcome back to another session on logic development. We are currently discussing concept of arrays. Yesterday we took two exercises and I had asked you to solve at least the second one. And it looks like there are some submissions over here. The wind speed was a problem statement. Those who don't have the problem statement can have a look at the problem statement. I'll just share a snapshot of the problem statement for those who don't have the problem statement. Okay. Kaustubh, you said you have solved two. Have you solved the hotel problem as well? No, sir. That wind speed array in two ways, sir. Okay. We have solved it. Okay. So for those who don't have the problem statement, so we are about to discuss it. So the problem statement has been shared with you for your reference. Okay. Rahul, no, Ashish was not there yesterday. Sairam was not there. So Ashish and Sairam and Bhagyashree was also not there. Ashish, Sairam, Bhagyashree, have a look at this problem statement quickly before we go in. And let's look at the solution. So the first solution comes from Kaustubh, you alone have solved it, or Sir, we have solved it mutually. Who are that we? Sir, Sagar Korate, Rahul Jha, Huh? Sanjay Rupanwar, and me. Okay, very good. So four of you joined together to solve. Yes, sir. Okay, that's very good. Okay, so let's have a look at your solution, whether it's right or not. Let's quickly read the problem statement as well. It says Ganesh has a weather station in his house. He keeps a track of the fastest wind speed for each day for 2 weeks. Now we'll discuss the solution. Fastest wind for each day of 2 weeks. And each day of 2 weeks, 14 दिन का he has maintained the records. He would like to know the average wind speed over the 2 weeks. So 2 week का average क्या है? The days on which the highest wind speed and lowest wind speed were recorded. He would like to know which is the day on which the lowest and highest speed was recorded, the first day, second day, third day, whatever it is. And the difference between the highest wind speed recorded and each day's average speed. So highest record between the highest wind speed recorded and difference between the highest wind speed recorded and each day's average wind speed. यानी highest wind speed और हर दिन के days का difference आपको दिखाना है. Okay, so let's have a look at it. So number of days you are taken is 17. You create an array, fastest wind speed array. That's for 14. That's very good. Highest wind speed you take as -1. Lowest wind speed you take as 10,000. These are again assumptions, correct? Yes, sir. So these values cannot be crossed. So you assume that this is the highest and the lowest, okay? Let's say then average wind speed, day counter, highest wind speed, lowest wind speed, and sum of the wind speeds. Day counter in the range of 0 to number of days -1. So this will be 14 elements. So you will cycle through 14 times. 14 times you're going to ask for some value. Enter the fastest wind speed record on the day counter +1, very correct. And you are recording that day. And then some में वो add करो. Some क्यों चाहिए average के, okay. And then fastest wind speed on day counter greater than highest wind speed. Just to save on one loop, you have made this assumption. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Okay. But then we cannot make some assumptions. Who said lowest wind speed itna hi hai? While unit of measurements have not been given to us. Yes, sir. So We don't have unit, so we cannot make such assumptions. yes, sir. Okay, but assuming this was true, this was true, which is not right. So यहाँ चलते हैं fastest wind speed for the day अगर greater than wind speed, highest wind speed है. Highest wind speed आपको पता ही नहीं है. ये चाहिए -1 दिया आपने. Then highest wind speed is the fastest wind speed for the day counter. Highest wind speed is equal to highest speed of the day is equal to day counter +1. ये क्या है? सर वो डे रिकॉर्ड करने का. Okay, but यहाँ हर जगह आपको calculate लिखना चाहिए. Where you are doing these calculations, you should say calculate here. Yes. So highest wind speed day का day number रखना है आपको, इसलिए आपने ये किया है. Okay. Then if the speed is less than the lowest wind speed, again a wrong assumption कि lowest wind speed है. Then lowest wind speed is equal to fastest wind speed का day counter. So that's the lowest wind speed. So why say fastest wind speed? You could just say wind speed.
lowest wind speed का day counter. Okay, so once we come out, you're gonna find the average. I'm gonna put in the details. Okay, so let me see the second way. What how have you solved it? You said two ways किया ना आप लोगों ने? यस सर, तो सेकंड इसमें सर, फर्स्ट इसमें सर दो लूप लगा है. Let us check. Okay, so you haven't made any assumption about Yes, minimum sir, and ये maximum नहीं. का assumption नहीं किया. Okay, ये नहीं है सर, ये नहीं, नहीं ये किसका है? वो नहीं मालूम सर. वर्जन 1 था सर हमारा. That's Oops. mine, our team. Okay, let's Prithviraj solution. Let's have a look at his solution. He says day, wind speed. Prithviraj अगर ये constant है, it should be in capital. Okay, so that's one change you could have done. It should be capital. So your total days that is 14. Minimum wind speed का sum 0 है. Average wind speed, max wind speed, difference in max and min speed. ये क्या है? Because what is this? Sir? The total day is 14 only. Total days 14 नहीं. It's like wind speed for 14 days, right? Yes, yes. So you should have given the right name. For day in the range of 0 to total days. अब total days 14 है. 0 से 14 चलोगे तो 15 days का ले रहा हूँ. Yes. Okay. So total days -1. Okay. And step 1. और ये for खत्म भी तो करो. अरे for प्रोग्राम आधा ही छोड़ दिया. आउटपुट नहीं प्रिंट किया. No, actually, our team joined together and we were trying. And afterwards, Okay, let's see. But I just added something. okay. Wind speed for the day. Day 0. Day 0 नहीं होगा. Day 1 रहेगा. तो ये day +1 रहेगा. Day plus 1. So you accept the wind speed and you store the wind speed in the record of day. That's okay. Wind speed का sum equal wind speed का sum plus wind speed. That's also correct because wind speed का sum आपने 0 दिया है. This will accept the wind speed for all the days. फिर आपने average find कर दिया. फिर minimum और maximum आपने assume किया है. Record of 0 जो है, I will not keep this name as a record. Record की जगह आप लिख सकते थे wind speeds. या wind speed record. Wind speed record. तो wind speed record of 0 जो first day है वो mini और max वो दोनों दिया. This is better. Okay. Then day in the range of 0 to total number of days नहीं होगा. Total number of days -1. And step 1. ये चाहिए. If minimum wind speed greater than wind speed of the day, minimum wind speed का value 0 है. If that is greater than wind speed a day, the minimum speed is wind speed per day. Okay, that's correct. अरे आधा अधूरा क्यों कर रहे हैं? If है तो यहाँ then चाहिए. And if अगर यहाँ खत्म होता है वहाँ end if चाहिए. End if चाहिए. Again you are iterating once again. You are falling in love with for loop. एक ही बार for loop में यही कर लेते हैं. दूसरा condition ये लेते हैं. Then इसका end if. And if. And for. तो कम से कम मिनिमम और मैक्सिमम तो सही आ गया. एवरेज भी सही है. मिनिमम मैक्सिमम भी सही आ गया. But all these places you have to say calculate. I think you are getting tired. If it's a rule, it's a rule. You have no choice. At all the places. There's nothing like you like it, you don't like it.
ओके ये कर लिया तो 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गए एवरेज फाइंड कर लिया मिनिमम विंड स्पीड फाइंड कर लिया मैक्स विंड स्पीड फाइंड कर लिया other than that we are also required to find the difference between the highest wind speed recorded on each day and the average wind speed. So now that we have already found the average wind speed, this statement, sorry, let me close this. This particular statement should not have come outside the loop. This should have gone inside the loop itself. No, that would not be right. Okay, we could do that. I could say calculate. There's a difference of min max, max min speed. Hey, the day on which that maximum speed was recorded and the day on which the minimum speed was recorded, that has not been taken care of anywhere. So this is far from over. इसमें बहुत ज्यादा और changes है. तो इतने तो changes जरूरी थे. यहाँ तक तो ठीक था, but there are additional changes which are required. ऋतुराज, आप कौन-कौन थे जिन्होंने discuss किया ये solution? Monica, ma'am, me, Rohit, and Rohit was there. yes, Rohit was there. Okay, he has not come for the lecture. Anyway, there was one more solution that was submitted. Let's have a look at that solution as well. And hope that solution is complete. Was this the solution, Kaustubh? No, sir. No. वर्जन 1 लास्ट में सर विंड स्पीड डायरेक्ट वर्जन 1 ये हाँ ये सर ये ये है ना? हाँ ये Okay, number of days 14 है, fastest wind speed 14 है, highest, lowest, mean, average, so and so. Count in the range of 1 to number of days, step 1. And you accept the fastest speed by saying day counter -1. Okay, that will also do. That will also work. यानी यहाँ -1 लिखो या यहाँ accept करते समय -1 लिखो, it's one and the same. I hope all others are understanding. Huh? So please enter fastest wind speed record on the day 1. Huh? तो यहाँ day 1 है तो 0 पोजीशन पे array में हमने वैल्यू स्टोर कर दिया and then sum करते हुए sum find कर दिया. That's very correct. Sum का वैल्यू initially 0 रखा है. So till line number 21 it looks correct. Then you find the average. Then you are assuming fastest and lowest wind speed. That's again right. That's the right approach. And then we say day counter in the range of 1 to day counter was number of days plus 1. Fastest wind speed for the day counter -1 is greater than highest wind speed. If that is the case, then we say highest wind speed is this and day is equal to day counter. Day counter, that's 1. Very correct. And similarly, you are doing it for the lower. That's perfect. And then you are displaying the average wind speed, the highest wind speed, the lowest wind speed, the difference between the highest and यहाँ गलत है. Question क्या कह रहा था? Recorded and the difference between the highest and wind speed recorded and each days on each days average wind speed and हर एक दिन के लिए वो डिस्प्ले करना था. It was not the only for. तो अगर आप कहोगे highest wind speed, मुझे बताइए आपके पास ये highest wind speed है. You would like to know and the lowest wind speed and the difference between the highest wind speed recorded and each day's average wind speed. Okay, that's correct. Highest wind speed जिस दिन का है and the difference between the highest wind speed recorded यानी जो आपका highest wind speed जो रिकॉर्ड किया गया है और जो एवरेज है उसके अंदर का डिफरेंस चाहिए. Oh, that's correct. So you're saying the difference between the highest wind speed and the average wind speed is, and you're displaying the result. That's perfect. So this was a very good solution that you are coming with. Let me just have a look at it once again to find out if there are any mistake. Number of days ले लिए, fastest wind speed का array ले लिया with this name constant, highest wind speed, lowest wind speed, average wind speed, day counter ले लिया. The day on which the highest wind speed recorded, day on which lowest is recorded, and sum of the wind speed ले लिया. Day counter in the range of 1 to number of days, 14 times this loop will run. We'll accept the highest wind speed for the day and we'll find the sum. Since we have sum, we can find the average. We are assuming the first day's wind speed and is the lowest as well as the highest. अरे यहाँ गलती कर गए.
if this was the first day speed, then you have wasted your time again checking for the first day. Yes, sir, वो एक रहेगा sir. मतलब फर्स्ट डे का चेक नहीं किया था. तो यहाँ आपके पास एक चॉइस था. You could have started with 1 actually and stopped with this -1. इससे आपका वो unnecessary पास अवॉइड हो जाता. कैसे? सर Yes. इवन सेकेंड फॉर लूप भी फर्स्ट के साथ इंटीग्रेट कर सकते थे ना? एक मिनट. This I have identified. Let me at least take care of this first. Then we'll take care of, we'll think about what you're saying. तो यहाँ 1 day का जो calculation है first day का, that we could skip because we will now start with the second day directly. वहाँ पे सर हाईएस्ट स्पीड डे पे डे काउंटर +1 होगा. देखते हैं ना, एक एक कर लेते पहले. डे काउंटर का वैल्यू 1 है. ओके. हाई स्पीड डे ये जो है इन दोनों को 1 ही कर लेते पहले. आपको यहाँ दोबारा कुछ करने की जरूरत ही नहीं. So look at this now. We are assuming the highest wind speed and the lowest wind speed was recorded on day 1 only. Yeah? That's an assumption. Whereas highest wind speed, lowest wind speed, day का है, day का है. सर वही हाँ. डे था. Day था, day में हमने 1 स्टोर कर लिया. So here when we are starting, now we first day is taken care of. तो आपको जाना है अभी from 1 to 13. 1 to 13 तक ही जाना है. Correct. Number of days 14 है तो 1 to 13 ही जाना है. So here we'll move from 1 to 13. तो if record number 0 का डे तो आपने कंपेयर कर चुके हैं और वो स्टोर भी कर लिया है. Then we are checking the fastest speed on the day 2, that is 1. 1 means day 2 is greater than the highest wind speed. Then the highest wind speed is the speed on the second day, and the day counter which is 1, which means the second day. अच्छा. सर वहाँ पे डे काउंटर 1 means the +1. second day. हाँ. 1 means the second day. तो आपको यहाँ +1 लिखना होगा और यहाँ भी हमें +1 लिखना होगा. Okay, and that will take care of the problem. So that unnecessary comparison that you are doing now will be totally avoided. यानी ये जहाँ आप यहाँ 0 से अगर स्टार्ट करते हो तो in that या 1 से स्टार्ट करते हो या -1 लिख देते हो, then you actually had to compare the first day. So then I can avoid doing that 14 comparison. Instead we will do it in 13 comparison itself, because first day we have made an assumption, and that's done. Now this thing, Sairam, you're saying something? सर जो फर्स्ट फॉर लूप है ना लाइन नंबर हाँ. 17 पे, हाँ. उसी के अंदर हम ये सेकंड जो फॉर लूप है उसके जो हाँ. दो इफ के कंडीशन है वही वो एग्जीक्यूट कर सकते थे ना? Okay, now to do that, tell me which is the highest speed and the lowest speed. Reference क्या रहेगा आपका? Initial we can assume highest speed as 0, हाँ. and then we can lowest compare speed? it with the lowest speed. Speed anyhow cannot be negative. So Okay. yeah, whatever will be the speed of day 1, we can हाँ. assume it as lowest speed as well तो as day 1 highest है, speed. कैसे पता चलेगा? That means we'll have to write a if condition inside this. Is this day 1? Yes. So if I write if condition, that if condition will be checked every time, 14 times. If condition will check 14 times. Yes. Yes or no? And then and that if condition is required only to take care of the first day. Yes. So that was unnecessary stuff. It's better that you introduce a loop over it. Okay.
और other thing Sir. that you said, if we make a right assumption कि speed कभी negative में होता नहीं है, तो हाँ. highest and negative दोनों minus ले ले हम लोग, then we could have kept it over. अगर ये assumption सही है, minus में अगर wind speed नहीं आता है, स्पीड तो माइनस में हो गया नहीं ना. so in that case we could have taken both as -1 because that's an illegal value, both as -1. So if I take both these as -1, then we can actually put this entire code सर लेकिन फिर लोएस्ट के लिए प्रॉब्लम आएगा ना. तो वही लोएस्ट तो हर बार माइनस में होता है क्या कभी स्पीड नहीं फिर सर अगर कंपेयर कर रहे तो लोएस्ट विंड स्पीड लेस देन जो मतलब हाँ जो वो तो कभी होएगा नहीं, -1 तो कभी आएगा नहीं. वो तो हाईएस्ट का क्या, लोएस्ट का हाईएस्ट की विंड स्पीड लोएस्ट के लिए हाईएस्ट क्या ले, दैट्स अ प्रॉब्लम ना. लोएस्ट के लिए सर सबसे Highest. बड़ी लेनी पड़ेगी. लोएस्ट के लिए सबसे बड़ी वैल्यू लगी. क्या सबसे बड़ी में क्या लेंगे? नहीं नहीं सर नहीं. मतलब ऐसा लॉजिक लगा सकते हैं कि जो अभी For तक lowest, you can take directly the first value entered by the Sir, user. Correct. मैक्सिमम अब So if you want to avoid this loop, we have two choices. Either accept the first day's temperature speed separately and then run this loop. Okay. So what you, सर स्टार्टिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं ना. that's what I'm Sir, saying. first- Accept it separately and then run the loop. Then you may not require two loops. यानी ऐसा कर सकते थे आप. Please हाँ, enter the day one fastest की wind पहले speed accept on कर ली. day 1. हाँ. On day 1. तो ये डे काउंटर लेते ही नहीं आप. Day 1 एक्सेप्ट कर लिया, ये 0 में स्टोर कर लिया डायरेक्टली डे 1 में, यस वही ये वैल्यू 0 में दोनों कर लिया. लो और And then set all कर. these settings that you have done, that could be done over here. So this will take care of all the problems. So you'll accept the first day's speed, and that is the highest and the lowest speed. Then I can safely take this particular code and avoid the second loop. यस And I can put this inside this. यस. I can put it over here. Plus, now that 0 has been taken care of, I'll have to say number of days -1. वन. One say, and that small change that I will do. Day जब 1 है तो यहाँ day counter +1 कहेंगे. That means 1 है तो second day होगा. यस. Day counter +1. या फिर रेंज ही 0 से नहीं बट 0 साइड है. हाँ ठीक है. पढ़ा? नहीं कुछ है. Whereas this will be day counter. 0th has been taken care of. यहाँ 1 से store हो जाएगा. और ये 1 के साथ ही कंपेयर करेंगे. यहाँ -1 नहीं आएगा. चेक इट आउट. अगर किसी को डाउट है तो पूछो, सर ऐसा क्यों कर रहे, वैसा क्यों कर रहे, कोई भी डाउट आता है तो. सर वो हाईएस्ट स्पीड डे और लोएस्ट स्पीड डे आपने असाइन किया है ना, वो नहीं आएगा ऊपर डिक्लेरेशन. डे ना, हाँ डिक्लेरेशन. सर वो -1 हटा दीजिए ना, अब उसकी जरूरत ही नहीं. उसकी जरूरत नहीं है. We don't उसके भी need और this. सर वो हाईएस्ट स्पीड डे वो भी असाइन किया ना सर, उसकी भी जरूरत क्यों हाँ. नहीं? सर क्योंकि डायरेक्टली हम वो डे काउंटर ले रहे हैं ना, उसमें डे काउंटर +1. नहीं बट एनी हाउ हमें डेट लगेगा ना कि किस कौन से दिन में हाईएस्ट स्पीड थी और लोएस्ट चाहिए. स्पीड चाहिए. वो चाहिए. That we need. For the first time, we'll assume that day 1 is the highest and the lowest. But then when we find that day, so in that case, जो भी day रहेगा, ये 1 रहेगा, तो यहाँ 2 करके उसमें store करना पड़ेगा. यस. That will be required. So this size of the program has reduced substantially. We have eliminated the other loop. And if average सिर्फ यहाँ हमने बाद में calculate कर लिया. Average के साथ अपने highest wind speed में से average को subtract कर लिया. And that is the solution that we have. So there was only need for one for loop, and that is taken care of our requirement. Have you all understood this? So if you spend time discussing, look how the solution can improve. Anybody has a question? कोई query है? Yes, anyone? Do you all agree to what has been written over here?
Now that आप लोगों ने इतना सोचा था, तो you should now quickly understand, अरे ये possible है क्या नहीं है, because आप लोग you are not coming blank ना, you are coming for the session after discussion, so you already had the discussion, so you should in position to even understand कि क्या हो रहा है. Is this right? Yes or no? यहाँ straight through logic use करें, दो if है, unrelated है, one is for highest and other is for lowest, and so on. I think this is perfect, and I'll still share the solution with you all. If you can figure out scenario where it can fail, it would be great. Our hotel manager's problem is still remaining, yeah? But then for that, I'm going to discuss something for you. Okay. Feedback, everybody is Rohit and Sanjay and Viral. You still have some problem? Sir, Rohit, I have Sanjay, to Viral? look it one more time. I joined late. Okay. I'll give it a look after. तर संजय- each hour का नहीं क्या accept करना, each हाँ? hour का each hour wind speed, Come again? each hour नहीं, each hour का कहाँ बोला है? क्वेश्चन में लिखा तो कहाँ लिखा है? क्या लिखा है? fastest wind speed for each day for 2 weeks. है ना, लिखा है कि हर घंटे का है? Yeah. नहीं ना, उस दिन का हाई स्पीड ही रिकॉर्ड किया गया है. each hour का लेते तो 24 लेने पड़ते टेम्परेचर्स. पैरेलल हो जाता, पैरेलल और यूज करते. हाँ, 24 आवर्स कौन लेगा? बट अगर क्वेश्चन डिमांड करता है तो लेना भी होगा. बट हैव यू अंडरस्टूड दिस नाउ एवरीबॉडी? Yes sir. Okay. Having understood this, I told you we are yet to solve that one big problem. And to solve that particular problem, we also need to discuss one more concept. So let me take you to another concept and see as to how you can apply that particular concept. While you are handling this logic, always ensure that you do not go beyond the bounds of an array. If you have an array of size 10, the bounds will be from 0 to 9. Always keep things in mind. The lower one will be 0 and the upper bound will be size -1. So your subscripts that you will take to access the elements in the array should not go beyond 0 to size of the array. Yeah, size of the array -1. If size of the array is 10, it should maximum subscript value, you will take it as 9 and so on. So the going out of bound is a very common error that we come across, that happens. So you have to be very careful when you do that. But sometimes the kind of arrays that we have seen right now, they are not good enough because they do not take care of your actual requirement. So then what is the solution for it? The solution for that is sometimes multi-dimensional or two-dimensional arrays. So what is a two-dimensional array? We had visualized a single-dimensional array earlier. So when it was visualizing a single-dimensional array, we said it's just a series of elements, sequence of elements which are stored in an order, correct? And then we had taken this diagram, if you remember. So this is a diagram that we had taken to visualize a single-dimensional array. All elements are stored in a sequence one after another. So these were marks of a student in 3 subjects, or these were marks of 3 different students that could be there. I had created this entire group, and this group of 3 variables was given a single name called as sum vals. Sum val of 0 was the first element, sum val of 1 was the second element, sum val of 2 was the third element, and so on. But then this may not always be the case. So now sometimes we require concept of two-dimensional array. So what exactly is this particular concept of two-dimensional array? What we had represented earlier was that entire array was represented as a single row. Now here we are going to have a two-dimensional array, wherein if you look at the first one, we have 3 rows, each row having 3 columns. So it's an array of order 3 by 3. So there are 3 groups of or 3 by 3. That means there are 3 groups and each group has 3 elements. If you look at this window pane, there are 2 groups. The first group has 2 glasses, second group has 2 glasses, the third group also has 2 glasses. So it's an order of 2 by 3. 2 by 3 means total 6. Here we are saying it's a group of 8 tomatoes, but how are they organized? In 2 different rows. So first row has 4 tomatoes and second row also has 4 tomatoes. So it's a 2, this was also a two-dimensional array, this is also a two-dimensional array. The order is different. Here the order was 3 by 3, here the order is 2 by 3,
Here the order is 4 by 4. So a lot of times these kind of arrays where you are now clubbing together more elements will serve your purpose. So 2' array is a block of memory location associated with a single memory variable name and designated by row and column numbers. So to access these elements, we'll not just be using column number, we'll use row and column. Last time, to access an element, we said the array name followed by the column number and we accessed it. Here we're going to use two things, the row number as well as the column number to access an element. Means if I have to access this orange color, I will say it's a row number 0, column number 1. To access this, what is this color? Pink color, I'll say it's row number 0, 1, 2. Third row, 0, 1, 2. Yeah. And a column is 0, 1. So 0, 1. To access this particular color, violet, whatever it is, I'll say 0, 1, second row, and 0, 1, 2. So 1, 2 is this, 1, 1 is this, 1, 0 is this. That's how we like to access the elements. So we'll access row number followed by column number. The row number is always the first and column number is second. That means if I have to access this element, I'll have to first specify the row number. Row number is 0, 1, 2, and the column number is 0, 1, 2. So 2, 2 is this, 2, 1 is this, and 2, 0 is this. Last row, 2, 0, 2, 1, and 2, 2. So that's how we'll be accessing elements in a 2' array. They are used for tables of values. They can replace parallel arrays. So if you're thinking about parallel arrays, 2 parallel arrays, you can club those 2 parallel arrays to create a 2' array. Okay. Nested loops are required to handle 2' arrays. Okay, and then this was the problem that was given to you. So let me take a simple example first to help you understand how to handle this 2' array. Now, once you have seen how to handle this 2' array, then we'll jump on to that problem once again, the problem that was already shared with you all. So let us take an example where we are required to handle a 2' array. So I'll take one problem statement that is already there with me. Everybody read this problem statement. I'm also going to share this problem statement with you, but I'll solve it for you. I'll solve it for you. Have you all received the problem statement for your reference? Okay, those who haven't, have a look at it. Madam Leela is a class teacher of class 8. There are 35 students in her class. There are total 35 students in her class. Each student has appeared for 6 papers. And there are 35 students, and each student is appearing for 6 papers. That means I require a 2' array where there are 35 rows, and each row has 6 columns. That means every row will represent a student, and likewise we'll have 35 rows which are present inside this array. Madam Leela wants to record the marks of every student in all the papers. So हर एक student का marks आपको accept करना in all the 6 papers. A writer program that helps her to store the marks that we'll do, generate a report that prints percentage scores for every student, along with average performance of the class in every subject. यानी 6 subjects है, तो हमें चाहिए student का average performance plus class का average performance in each of that 6 subjects, and all paper marks are out of 100. So let's implement this algorithm. Have you all understood the question? Question में किसी को doubt है क्या? Before we go ahead with the algorithm for it. Good feedback. Have you all understood the question? The requirements which have been given? Prithviraj? Okay. Let's jump ahead with the solution. So that's the Overhead problem boot statement. Yes, please. overhead boot चलत नाही आहे अजून. So कालपासून गडबड करते ना वर्ड साइन आउट करून साइन इन बघता येईल. आता हे सिडो कोड्स लिहित आहे ते इथेच देऊन टाकतो आता.
Is this visible? Or shall I change the color combination? No, It's sir, it is visible. Visible. No? So let's start. So we start and we define a lot of variables. First, let's make a provision to understand how many students are there. So how many students are there? 35. 35. So that's constant. How many subjects are there? 6. 6. So I am not interested in storing एक बंदे का mark store करना है 6 students में, 6 subjects में. I could have created an array called as mark of 6. That could have been good enough to store marks of a student in 6 subjects. But I say 35 students है, so I'm going to specify 2 things. ऐसे 35 students है और हर एक students का 6 subjects में marks मुझे store करना है. So now visualize an array like a 2-dash array where there are 35 rows and there are only 6 columns inside it. तो हमने हर एक row पे Sir. yes please. मार्क नावाचा ऍरे आणि त्याचे 2 लेंथ्स आहे का 35 आणि 6. So you'll have to visualize it in this fashion. That's what I'm saying. आपको इस array को ऐसे visualize करना होगा कि ये ऐसा array है. Let me just take कि जहाँ 35 rows है 1 2 3 4 5 और सिर्फ 6 columns है 1 2 3 4 5 6 और रोज की बात करें तो यहाँ 35 ऐसे रोज है. तो ऐसे जरा इसे विजुअलाइज कीजिएगा. तो कॉलम का भी सब्सक्रिप्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 and row subscript also start with like 0 1 2 3 4 and so on. So that's how we'll have to visualize this 2-dash array. Is that okay, Rohit? Yes sir. Yes sir. सर Yes please. सर रोज इंडिपेंडेंट होंगे क्या सर? रोज का है? रोज इंडिपेंडेंट मतलब आइडेंटिफाई होगा क्या? I did not understand what you mean by independent. मतलब सर रोज 35 डिस्टिंक्ट है ना, तो ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफाई कैसे करेंगे कि 35 ये रोज में ही आएंगे और कॉलम्स 6 में? Okay. आप That is with the syntax where we had said over here, if you just saw, यहाँ लिखा था हमने, each element number is written as कैसे तो row comma column. That's a part of the syntax. यानी जो पहला वैल्यू रहेगा वो रो रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा वैल्यू रहेगा वो कॉलम रिप्रेजेंट करेगा. वो है सर, बट कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रो में ही आएगा और ये कॉलम में आएगा? मतलब वहां पे क्या रो में आएगा? मतलब 35 अगर कॉलम में ले तो और चलेगा ना. तो आपको चलेगा. विजुअलाइज अलग करना होगा. फिर तो आप ऐसा कर सकते थे, there are 6 subjects and 35 students are appearing for 6 subjects. Okay. Correct? ओके. Okay. But now to overcome your difficulty, how am I going to define this array? वो देखो मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. कैसे डिफाइन करते समय बताएंगे what is in our mind. How do you specify that? I'm not going to say if I say marks of something comma something. तो ये पहला स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और दूसरा सब्जेक्ट है, या पहला सब्जेक्ट है और दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, कैसे पता चलेगा? तो अवॉइड दैट डिफिकल्टी while we define this array, I'm going to say ये total number of students है and the second subscript is for number of subjects. So actually these are values. So ये total students 35 है और ये 6 है, पर हमें अभी पता चलेगा ये रो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी हर एक स्टूडेंट के लिए एक रो और हर एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. तो by using name constant we are making our intentions very clear. If for 35 students we want a group of 6 variables. Is that okay? और उल्टा करोगे तो for 6 subjects we would like to have group of 35 variables. यस सर. So the named arrays make it very easy. 35 by 6, 6 by 35, that becomes confusing. Here yeah, total student की जगह आप number of students भी लिख सकते थे, so that would be actually more easy. Number of students Sir. and number of subjects. So Sir, when I say number of students, so now row represents number of students and column represents number of subjects. sir, Is that okay?
Cyrus was saying visualize it as a matrix. Very correct. तो ये मैट्रिक्स जैसा ही है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है. Now let us go back to the question. We had to first accept marks of all the students in all the papers. So let's do that thing first. So for that we'll take a Sir. counter. Yes, please. Viraj is having question. Yes, please. Sir, can we take number of subjects as rows Number of and number of subjects as rows and number of students as column? कर सकते थे, आपकी मर्जी. तो इन दैट केस एक स्टूडेंट का टोटल लेने के लिए आपको एक कॉलम का एडिशन, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स एज रोज ना. हाँ, तो आपको तो एरे कैसे रहेगा, 6/35 रहेगा, बराबर है. तो हाँ, हर सर. एक कॉलम स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा और हर एक हाँ. रो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. चलेगा, आपकी मर्जी. बट बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर, आई फर्स्ट टेक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज रो and number of subjects as column. You could visualize your logic the way you feel is appropriate. कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सिर्फ कैसे क्या है ये कन्वे होना चाहिए और कैसे क्या है इसके लिए ये लिखा मैंने. आप उल्टा भी कर सकते थे. सर नंबर ऑफ रोज कभी 0 नहीं हो सकता ना? नंबर ऑफ रोज कभी 0 नहीं हो सकता है. हो सकता है अगर नंबर ऑफ रोज 0 है तो नंबर ऑफ कॉलम्स 5 है, तो you don't need 2 dash array, you need only a single dash array where there are only 5 columns. तो फिर भी एक रो हुआ ना? हाँ, एक रो हुआ तो आप उसे एक रो कहो, एक कॉलम कहो. आप हॉरिजॉन्टली रखोगे तो एक रो कहोगे और मैंने उसको वैसे वर्टिकली रिप्रेजेंट किया तो एक कॉलम भी कह सकते हैं. सर एक कॉलम में फिर रोज नंबर ऑफ zero रोज नहीं होंगे ना? रोज 0 नहीं नंबर होगा. ऑफ रोज नहीं रहेंगे. जब आपके पास दो चीजें हैं, रोज एंड कॉलम्स, ओके, तो इट विल लाइक आई लेट्स हैव अ लुक एट दिस. दिस विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड इट. अगर मैं एक्सेल में चलता हूँ तो अगर आपका सिंगल डैश एरे है, एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स है, वो आप उसे वन कॉलम में रिप्रेजेंट कीजिएगा, हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कीजिएगा या वर्टिकल रिप्रेजेंट कीजिएगा. रिप्रेजेंट कैसे करना है आपकी मर्जी है. अगर ऐसा कुछ है आपके पास, आपको एक सिंगल डैश एरे रिप्रेजेंट करना है, तो यू कुड रिप्रेजेंट द सिंगल डैश एरे समथिंग लाइक दिस. यू कुड कीप इट हॉरिजॉन्टली. आप ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे. ये मेरा सिंगल डैश एरे है, ओके. जहाँ आप कहोगे सर मेरे पास एक रो है और एक रो में इतने कॉलम्स है, ऐसा कह सकते हैं. Hold on. ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या इसी एरे को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कुछ ऐसा भी कर सकते थे. आप इसे सर मेरे पास एक ऐसा है और उसमें इतने सारे रोज है, तो व्हेन यू रिक्वायर ओनली अ ग्रुप ऑफ रोज या ग्रुप ऑफ कॉलम्स, डोंट थिंक अबाउट इट एज 2 डैश एरे. ये 2 डैश एरे नहीं है, ये सिंगल डैश एरे है, जिसमें आइदर आप उसे हॉरिजॉन्टली कह रहे हो और एक कह रहे कॉलम नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, या 0 1 2 3 4, यानी हर एक एलिमेंट को रेफर करने के लिए आपको एक ही इंडेक्स की जरूरत है. आप उसे रो इंडेक्स कहिए या आप उसे कॉलम इंडेक्स कहिएगा. व्हेन आई एम रिप्रेजेंटिंग इट हॉरिजॉन्टली, तो मेरे लिए कॉलम इंडेक्स बन जाता है. ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ऐसे मेरे लिए कॉलम इंडेक्स बन जाता है. विच एलिमेंट आई एम ट्राइंग टू एक्सेस.
बट पॉइंट क्या है, यहाँ एक ही एलिमेंट, एक ही इंडेक्स काफी है फॉर यू टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इनसाइड दैट एरे। उस एरे में उसकी पोजीशन देखने के लिए आपको एक ही इंडेक्स काफी है। तो लाइकवाइज ओवर हियर इफ आई टेक दिस एज 0 1 ऐसा लेता हूँ, ये मेरे यहाँ के इंडेक्सेस है सपोज, और इनको भी सेंटर लेता हूँ, कलर रेड करता हूँ। तो यहाँ भी एक्सेस करने के लिए एरे का नाम समझो कुछ तो है, ARR है। तो अगर मुझे यहाँ समझो यहाँ स्टोर था वैल्यू 10, यहाँ स्टोर था वैल्यू 20, ये इसके अंदर स्टोर किए गए वैल्यूज थे। लाइकवाइज यहाँ भी वैल्यू थे सपोज 10 20, ये वैल्यू स्टोर। फॉर सम रीजन मुझे 50th वैल्यू चाहिए था, इस एरे का नाम ARR है, तो आई ऑलवेज से ARR ऑफ 4, ARR ऑफ 4। तो अगर मैंने ARR ऑफ 4 कहा तो इस एरे के अंदर का 0 1 2 3 4th इंडेक्स पर का ये वैल्यू दैट इज 50 में हो जाएगा। और यहाँ भी कहा तो 0 1 2 3 4, ये 4 है। अब मुझे आप बताओ ये 4 रो है या कॉलम है, दैट डजंट रियली मैटर फॉर मी। आप इसे रो नंबर कहिए, कॉलम नंबर कहिए, कुछ भी कहिए, it's just a single H array, so I just have to give the index which will identify the position of that element inside that particular group. There is a single, it's a series of elements which have been arranged. आप उसे विजुलाइज करने के लिए हॉरिजॉन्टली विजुलाइज कीजिएगा या विजुलाइज करने के लिए वर्टिकली विजुलाइज कीजिएगा, मेमोरी से उसे कोई मतलब नहीं है, ये विजुलाइजेशन है सिर्फ आपका जो कन्वीनियंट लगता है। व्हेन आई टेक एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग, मैं वर्टिकली विजुलाइज करता हूँ और कभी कभार मैं हॉरिजॉन्टली विजुलाइज करता हूँ, है तो वो एक ही सीक्वेंस। और एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, एरे का नाम देना है, you have to give only the array name and the index. So in this case also 50 is at index 4, or this case also 50 is at index 4, so it doesn't really matter मैं उसे vertically लिखूं या horizontally लिखूं। But it definitely does matter when I'm trying to store. Suppose these are 6 subjects, 1 2 3 4 5 6, and there are 10 students in the class, तो आपने एक array ऐसे define किया, तो यहाँ मैटर करेगा बिकॉज फिर यहाँ सब्जेक्ट्स और ये दोनों चीजें अलग है। तो ये 0 1 वगैरह हमने डिफाइन कर दिया है। दीज आर माई सब्जेक्ट नेम सपोज नंबर्स, दीज आर माई सब्जेक्ट नंबर। तो 6 सब्जेक्ट्स है तो मैंने कहा दीज आर माई 6 सब्जेक्ट्स। ओ देयर आर 35 स्टूडेंट्स, नाउ सिंस देयर आर 35 स्टूडेंट्स, या मेरे पास अभी 10 स्टूडेंट्स है तो ये 0 to 8 जो भी 10 8 जो भी रहेंगे, तो 8/6 या 9/6, ये 9 हो गया, 9/6 देयर आर 9 स्टूडेंट्स and each students are paying for 6 subjects. अब यहाँ जो मार्क्स स्टोर करूंगा that will be very important. ये 0 will represent marks of the first student. That means अगर मैं इसे banded ले लूँ तो I could say these are representing marks of the first student. These are representing marks of the second student. ये दूसरे students के marks है, ये दूसरे students के marks है, ये तीसरे students के marks है. So these are different students whose marks have now been represented. These are different students whose marks are now being represented. ये 3 अलग स्टूडेंट्स है, पहला स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है, ये दूसरे स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है, ये तीसरे स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स है, एंड सो ऑन। व्हाट ही वाज आस्किंग कि मैं इसे रिवर्स कर सकता था कि हाँ यू कैन चेंज दिस, यानी आप ले सकते थे 6 रोज एंड 9 कॉलम्स। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, एवरी रो वुड रिप्रेजेंट वन सब्जेक्ट and every column would represent one student. In our case, every row is representing one student and every column is representing one subject के class के marks, पूरे class के marks. So that's how we are doing the visualization. Is that okay? आशीष आपका डाउट क्लियर हो गया? Yes, sir.
ऐसा आप उसे विजुअलाइज कर सकते थे सिंगल ऐसे एरे के लिए। तो अगर हम लोग टू डायमेंशन की बात करें, यहाँ हमें इस एलिमेंट का पोजीशन बताया, फर्स्ट एलिमेंट है, नाइन्थ एलिमेंट इन द एरे एंड सो ऑन। अब हम बात करें टू डायमेंशन एरे की, ऐसे। So let's example it. So we have number of students, number of subjects, and marks in the video. Now I'll have to move from one subject to another. So I'll say subject number, student number. So first we'll take care of accepting the details. So I'll say as a student number in the range of 0 to number of students minus 1. So आपका 0th row will represent the first one. That's right. अब मुझे पहले स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेप्ट करना है, तो ऐसे look at this. यहाँ भले मैंने स्टूडेंट एनओ लिखा है, मैसेज में ना एनओ नहीं लिखूंगा, बिकॉज मैसेज शुड बी वेरी क्लियर. What user gets to see, वो यूजर को समझ आ रहा स्टेटमेंट चाहिए. तो ऐसे प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर प्लस 1, बिकॉज नंबर 0 है तो 0 + 1 = 1. तो डिस्प्ले पर्पस के लिए. नाउ वी हैव टू एक्सेप्ट द मार्क्स. I'm going to say accept. एंड मेरे पास मार्क का एरे था, मार्क्स ऑफ व्हाट. तो इफ आई से स्टूडेंट नंबर, तो ये तो सिंगल ऐसा एरे है नहीं. एवरी स्टूडेंट इज गोना अपीयर फॉर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स. तो आपको रो नंबर भी देना है और कॉलम नंबर भी देना है. तो दिस इज टेकिंग केयर ऑफ रो नंबर. तो एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में थोड़ी ना अपीयर कर रहा है. वन स्टूडेंट इज अपीयरिंग फॉर 6 सब्जेक्ट्स. अभी 6 सब्जेक्ट के मार्क्स कैसे एक्सेप्ट करें. तो हियर we are simply enter marks of student number 1, but he's not going to accept marks in one subject. We are going to supply his marks in multiple subjects. So we'll have to give कौन से subject में, पहला subject, second subject, third subject, fourth subject, fifth subject. So here I have to take one more look for subject number in the range of 0 to number of subjects -1. Number of subjects -1. Step back. So while this loop is taking care of moving from one student to another, this loop will take care of moving from one subject to another. यानी पहले स्टूडेंट के ये मार्क्स, तो ये पहला मार्क एक्सेप्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, एंड सो ऑन. So for that, I'll again have to give a message. So here I go. I give a message saying display please enter marks in subject number +1. Note कीजिएगा. So we are using a for loop inside a for loop. The first statement we have just said please enter the marks of student number 1. Actually counter 0 है, but यहाँ हम कहेंगे student number 1. And यहाँ जाके हम लोग कह रहे हैं for subject number in the range 0 to number of subjects -1, यानी 0 to 5 चलेगा, यानी 6. So display enter the marks in subject number 1, यानी स्टूडेंट नंबर 1 का सब्जेक्ट नंबर 1 के मार्क्स दीजिएगा. तो फर्स्ट इज द स्टूडेंट नंबर एंड सेकंड इज द सब्जेक्ट नंबर. पहली बार दोनों भी 0 0 है. सब्जेक्ट नंबर ये एक्सेप्ट कर लिया और ये एंड फॉर
और ये भी एन फॉर। अब इससे क्या होगा, अज्यूम करो पहली बार देखिए, पहली बार स्टूडेंट नंबर का वैल्यू 0 है, बट वी आर गोना से प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर 1। अगली बार सब्जेक्ट नंबर का वैल्यू 0 है, बट वी आर गोना से प्लीज एंटर द मार्क्स इन सब्जेक्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 1 इज एक्चुअली 0,0। हमारे केस में 0,0 ये है, दिस इज 0,0 और आई जस्ट पुट द कलर ओवर देयर। ये मेरे लिए 0,0 है, तो यहाँ कलर डाल देता हूँ उसमें, ये मेरे लिए 0,0। एट 0,0 वी हैव स्टोर द फर्स्ट स्टूडेंट्स मार्क्स। कैसे स्टोर किया हमने फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, देखो तो जरा। हियर आई सेड एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट नंबर जिसका वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम 0 है, सब्जेक्ट नंबर जिसका वैल्यू भी फॉर द फर्स्ट टाइम 0 है। तो 0,0 पे हमने पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए, 0,0 पे फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हमने एक्सेप्ट कर लिए। बट until unless you do not come out of this group, यहाँ तो आप जाओगे नहीं। तो next time when we say step 1 over here, the subject number increased by 1, subject number now becomes 1, so this becomes 0,1। तो ये 0,1 क्या रहेगा, 0,1 ये आ गया, 0,1 ये दूसरे सभी एक्सेप्ट कर लिया, 0,1 ये दूसरे सभी के मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए। Then step 1, subject number now becomes 2, is 2 in the range of 0 to 5, yes, so we'll say please enter marks in subject number 3, actually 2 है सबसे, but 3 कहेंगे, and 0,2, तो ये 0 रो है और ये 2 है, तो यहाँ थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए, थर्ड सब्जेक्ट में मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए। आफ्टर वी एक्सेप्ट द मार्क अगेन स्टेप 1, so now this becomes step 1, that becomes 3, so we are saying please enter subject number in the range of 3 in the range of 0 to 5, yes, so we go inside, we say please enter marks in subject number 4, but ये है 0 और ये है 3, तो देखिएगा ये 0 और ये है 3, यानी यहाँ आ गए, यहाँ के we are accepted marks in of the third student or fourth subject में marks accept कर दिए। Now that we are accepted marks in the fourth subject, step 1 counter now becomes 4, is 4 in the range of 0 to 5, yes, so it now becomes 0,4। नोट कीजिएगा 0 तो है यानी पहला स्टूडेंट, फोर्थ कॉलम मतलब उसके फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स हमने एक्सेप्ट कर लिए, तो वी आर नाउ एक्सेप्टिंग हिज मार्क्स इन फिफ्थ सब्जेक्ट, तो फिफ्थ सब्जेक्ट के मार्क्स हमने एक्सेप्ट कर लिए, व्हाट एवर द मार्क्स आर, वी आर नाउ एक्सेप्टेड मार्क्स इन फिफ्थ सब्जेक्ट। And then after accepting marks in fifth subject, again step 1, so that becomes 5, is 5 in the range of 0 to 5, yes, if that is true, we go inside, we say please enter marks in subject number 6, and 0,5 में हमने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर मैं यहाँ 0,5 कहता हूँ तो मैंने यहाँ मार्क्स एक्सेप्ट कर दिया, तो मैंने एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट कर लिए। आफ्टर आई हैव एक्सेप्टेड हिज मार्क्स, स्टेप 1 से काउंटर ये सब्जेक्ट नंबर becomes 6, if 6 in the range of 0 to 5, condition is false, we come out of this loop, we go here, step 1 इंक्रीमेंट कर दिया, स्टूडेंट नंबर इंक्रीमेंट हो गया, जो अभी पहला बार 0 स्टूडेंट चल रहा था, अब फर्स्ट स्टूडेंट की बात करेंगे, अब 0, 1,0, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 करते हुए एक एक स्टूडेंट को हम लोग एक्सेप्ट, एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स एक्सेप्ट करते जाएंगे, एंड सो ऑन टिल वी अवॉइड एक्सेप्टिंग मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन एवरी सब्जेक्ट। इज दैट ओके? Have you understood what we have just now discussed? Quick feedback. Okay. Now that we have accepted this, let's move further. Let's have a look at the question once again. Question क्या कह रहा था? Madam Leela in the class to the standard 35 students इतने हैं. Each student has appeared for 6 papers during the mid-semester exam. Madam Leela wants to record marks of every student in every paper. तो ये तो हमने requirement fulfill कर दी. Write a program which helps us to store marks and generate report that prints percentage scored by every student. तो ये लिखते हैं percentage secured by every student, वो requirement fulfill कर देता है। तो हर एक स्टूडेंट का परसेंटेज क्या है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है, परसेंटेज है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ जाना होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स, सेकंड सब्जेक्ट मार्क्स, थर्ड सब्जेक्ट मार्क्स, फोर्थ सब्जेक्ट मार्क्स, फिफ्थ सब्जेक्ट मार्क्स, सिक्स सब्जेक्ट मार्क्स, ये सारे मार्क्स हमको ऐड करना होंगे एंड डिवाइड बाय 600। टोटल सब्जेक्ट 6 है, हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स आउट ऑफ 100 है, अज्यूमिंग दैट द मार्क्स आर एंटर्ड करेक्टली, तो दे आर आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 600, तो ये टोटल मार्क्स को आपको डिवाइड करना होगा बाय 600. Okay, means we'll have to find percentage out of 600 and percentage and average will remain the same, so divide by 6 करूंगा तो मुझे average या percentage आ जाएगा। So let's do it.
देखो, तो यह ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा अभी। आपको टोटल मार्क्स चाहिए, तो विल इंक्रीज द वेरिएबल। वेट किसके टोटल मार्क्स है हमें नहीं मालूम। आई जस्ट से टोटल मार्क्स और यहाँ लिखता हूँ कैलकुलेट। मैं जानबूझ के टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट या टोटल मार्क्स इन सब्जेक्ट ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जानबूझ के आपको पता चलेगा कि ये टोटल मार्क्स है। अब मैं स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स फाइंड करूंगा, तो हियर इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग ऑफ दिस आई जस्ट ऐड द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आई से कैलकुलेट total marks is equal to total marks plus mark of student number subject number. Student number for the first time is 0, subject number is 0, so 0,0 is the first, ये वाला 0,0 is the first, वो total marks में add हो गया। After that step 1, counter now becomes 1 in the range of 0 to 5, yes, तो total में ही दोबारा ऐड करेंगे mark of 0,1, तो 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ये सारे मार्क्स टोटल में ऐड कर दो एंड देन विल डिस्प्ले द स्टेट। डिस्प्ले द टोटल बोला है कि प्रिंट करने के लिए प्रिंट द मार्क्स एंड जनरेट द रिपोर्ट टू शो परसेंटेज सिक्योर्ड बाय एवरी स्टूडेंट। ओके, परसेंटेज चाहिए हमें ना, ये नहीं चाहिए, परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके पास 6 है ही, तो यहाँ परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। we have percentage marks, I would say calculate percentage marks is equal to total marks divided by number of subjects. तो ये आ गया आपके percentage marks। तो I say the percentage marks of student number student number plus 1, because for the first time student number 0 दिखाई देगा, तो हम कहें percentage marks of student number 0 are तो here we have printed percentage marks of every student। क्या किया हमने, अगली बार सेकंड स्टूडेंट पे जब जाएंगे, समझे ये हमने फर्स्ट स्टूडेंट के डिस्प्ले कर दिया, स्टेप 1 कहने पर स्टूडेंट नंबर बिकम्स 1 इन द रेंज ऑफ 0 to 5, यस, वी आर अगेन रीसेटिंग मार्क्स टू टोटल मार्क्स टू 0। ये नहीं करोगे तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स विल गेट एडेड इन द सेकंड स्टूडेंट मार्क्स। So here we are reset the total marks to 0 and now we say subject number in the range of 0 to 5, again total marks जो 0 है, total marks equal to 0 plus marks of ये आएगा 1,0, 1,0 क्या आएगा, 1,0 ये है, 1,1 ये है, 1,2 ये है, यानी ये ऐसे ये 1,0 है, then this is 1,1, then this is 1,2, then this is 1,3, then this is 1,4 and this is 1,5। ऐसे करते हैं हम लोग सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट से मार्क्स कवर कर लेंगे। और ये टोटल कर लिया हमने और फिर परसेंटेज फाइंड कर लिया और उसे प्रिंट कर लिया। सो दिस हैज टेकन केयर ऑफ प्रिंटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ every student, percentage marks of every student we have printed। Okay, now that we have printed percentage marks of every student, हमें अभी क्लास का परफॉर्मेंस चाहिए था। तो क्लास का परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट नंबर ये है, तो ये टोटल कर लिए तो ये क्लास का टोटल आ जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट में, ये क्लास का टोटल आएगा सेकंड सब्जेक्ट में, ये क्लास का टोटल आएगा थर्ड सब्जेक्ट में, ये फोर्थ सब्जेक्ट में, ये फिफ्थ सब्जेक्ट में, ये और ये आएगा क्लास का टोटल इन द सिक्स्थ सब्जेक्ट। तो आपको अभी एक्सेस करते हैं, उल्टा एक्सेस करना, कॉलम नंबर फॉलोड बाय रो नंबर, यानी 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चल रहा है। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, है वो लोग, ये वी ऑलवेज हैव टू स्पेसिफाई रो नंबर ना पहले। तो अभी रो नंबर देख के हम लोग क्या करेंगे, तो इन दैट केस माय रो नंबर विल वैरी बट कॉलम नंबर विल रिमेन फिक्स्ड।
अगर आप यहाँ देख रहे थे, यहाँ एक्सेप्ट करते समय कॉलम नंबर रो नंबर फिक्स रह रहा था, सब्जेक्ट नंबर कॉलम नंबर चेंज हो रहा था। अब उल्टा करेंगे, ऐसे फॉर स्टूडेंट नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to 9, अब ये लूप मैं पहले लूंगा सब्जेक्ट का, ऐसे फॉर सब्जेक्ट नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to नंबर सब्जेक्ट, एंड यहाँ मैसेज डालूंगा ये फॉर स्टूडेंट नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to नंबर स्टूडेंट -1, यानी पहला लूंगा मैं सब्जेक्ट नंबर और फिर लूंगा मैं स्टूडेंट नंबर, और टोटल मार्क्स हर समय 0 लूंगा हर एक क्लास का। एक क्लास का टोटल मार्क्स है, इसे हम लोग 0 लेंगे। और कैलकुलेट करते समय क्या कैलकुलेट करेंगे देखो तो सही, ऐसे कैलकुलेट टोटल मार्क्स ऑफ मार्क ऑफ हियर, ये उल्टा करते हैं। ये जो सब्जेक्ट नंबर जो है ना, ये पहले लेते हैं। अब मैं कहूँगा मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट नंबर बाय स्टूडेंट नंबर। ओके, तो सब्जेक्ट नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम इज 0, ध्यान से देखो। स्टूडेंट नंबर इज इन द रेंज ऑफ 0 से 35 तक, 34 तक। तो पहली बार ये जब 0 है तो ये चलेगा 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाएगा। तो ये था 0 था। ओके, सब्जेक्ट नंबर फिलहाल मेरा 0 है, ये मेरा 0 है। दूसरा लिया स्टूडेंट नंबर विल वैरी फ्रॉम 0 to 35। तो 0,0 ये है, 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 ऐसे एक एक करते हुए हम लोग 35 तक जाएंगे। ओके, यानी 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4, यानी ये फिक्स्ड है 0। ये 1 2 3 3 4 5 6 7 ऐसे 35 तक जाएंगे। कैसे लिख रहा हूँ मैं? टोटल मार्क्स इज टोटल मार्क्स प्लस मार्क ऑफ सब्जेक्ट नंबर जो 0 है मेरा, एंड स्टूडेंट नंबर जो चेंज हो रहा है, सॉरी सब्जेक्ट नंबर जो मेरा 0 है और स्टूडेंट नंबर चेंज हो रहा है। तो ये अगर ऐसा लिखता हूँ मैं सब्जेक्ट नंबर स्टूडेंट नंबर, तो सब्जेक्ट नंबर फिलहाल 0 है, तो ये 0 रो नंबर आता है पहला, और दूसरा कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर चेंज होगा फ्रॉम 0 to 35। तो एक्चुअली ये ऐसे चलेगा, ये नहीं चाहिए मुझे। तो आई वॉन्ट द सब्जेक्ट नंबर टू रिमेन फिक्स्ड एंड द स्टूडेंट नंबर टू चेंज। तो ये जो सब्जेक्ट नंबर मैंने यहाँ स्विच किया था वो स्विच नहीं करेंगे, एक्चुअली विल कीप इट एज इट इज। देखते हैं एज इट इज रखने से होगा क्या। अगर मैंने ऐसे रखा जैसे पहले रखा था, पहला तो रो नंबर दूसरा कॉलम नंबर, मैंने कहा स्टूडेंट नंबर। अब स्टूडेंट नंबर पहली बार क्या है बताइए मुझे? जीरो 0 है। सब्जेक्ट नंबर क्या है फॉर द फर्स्ट टाइम? 0 0 है। तो 0,0 इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट का फर्स्ट स्टूडेंट का मार्क्स। ओके, यानी स्टूडेंट नंबर फर्स्ट स्टूडेंट का फर्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स ये आ गया, ये 0,0। आफ्टर दिस स्टेप 1 स्टूडेंट नंबर इंक्रीज, स्टूडेंट नंबर बिकम्स 1, तो ये बन जाएगा 1,0। तो 1,0 ये आ गए, फिर 2,0, फिर 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0 ऐसे स्टूडेंट नंबर चेंज करते जाएंगे। सब्जेक्ट नंबर फिक्स रखा है, तो वो कॉलम के सारे वैल्यूज हमने ऐड कर लिए। फिर मैंने कहा परसेंटेज मार्क्स टोटल मार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट की जगह भी ये नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे। सर बोलो। सर वो टोटल स्टूडेंट का निकालना है ना, आपने ये क्लास स्टूडेंट का का टोटल निकाला। हो गया ना? सर वो हॉरिजॉन्टल जाएगा ना जो ये हॉरिजॉन्टल कैलकुलेशन जाएगा ना? देखो सर तो अभी आप कर रहे थे वो। यहाँ देखो, यहाँ मुझे यहाँ आइए, ये सब्जेक्ट नंबर इन द रेंज ऑफ 0 to नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो पहली बार सब्जेक्ट नंबर 0 है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट नंबर स्टूडेंट नंबर विल वैरी फ्रॉम 0 to 35। यस सर। ओके, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जब सब्जेक्ट नंबर 0 था, स्टूडेंट नंबर भी 0 है, तो यहाँ आएगा 0,0। तो 0,0 ये ब्लैक आ गया, पहला आ गया। अब आपको ये चाहिए 1,0 ये वाला चाहिए, वो कैसे आएगा? But in sir, in question it is saying that you should calculate per students total. So ये कर all लिया ना 6 अभी, subjects. यहाँ कर लिया स्टूडेंट का। Sir, that last statement in the end. दो पार्ट क्वेश्चन है उसमें, 2 पार्ट है। बाद में वो कहता है, यहाँ क्वेश्चन देखो,
क्या कहता है? Write a program which helps her to store marks and generate the report that prints the percentage score for every student. ये है पहला part, percentage score for every student. Yes, sir. So I have taken care of this percentage marks of every student. Find कर लिया हमने यहाँ. Okay, okay. Yes. Then later it says with average performance of the class in every subject. हर एक class का average performance भी चाहिए. Class का average हाँ, sir. performance कैसे आता है? Class के हाँ. सारे students का marks in that subject divided by number of students. Yes, sir. Got it. Sir, I Okay. mixed that both. Okay. तो यहाँ आने पर we are now calculating total marks. This total marks is total marks of the class in that subject. Subject number 0 का total आ गया. तो ये percentage subject number 0 का आ गया. So I'll say percentage या average. You can say anything. Average and percentage is exactly the same. The average marks of the student number नहीं. Average marks of the students of the class in subject number one are percentage marks. ये आ गया. So and then we say stop. So what have we done? We have first calculated average performance of the student in 6 subject, and here we have calculated average performance of the class in every subject. Class के लिए क्या किया हमने? ध्यान से देखो, स्टूडेंट का एवरेज परफॉर्मेंस जब चाहिए था तो मैंने इस तरीके से गया हूँ. रो नंबर ये अगर इस रो पे हूं मैं तो रो नंबर फिक्स्ड है. कॉलम नंबर 0 1 2 3 4 5 यानी 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5. और जब क्लास का चाहिए था तो मैंने कॉलम नंबर फिक्स रखा यानी 0,1 then 1,1 then 2,1 then 3,1 then 4,1 5,1 6,1 7,1 8,1. इस तरीके देखिए यहाँ ये किया मैंने. यहाँ मैंने सब्जेक्ट नंबर फिक्स रखा है और फॉर एवरी सब्जेक्ट नंबर समझे 0 है तो कॉलम नंबर वैरी फ्रॉम 0 to 35. ये देगा मुझे क्लास का टोटल. एक बार वो क्लास का टोटल आ गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो दैट विल गिव मी द परसेंटेज मार्क्स ऑफ दैट क्लास. परसेंटेज इज एवरेज तो मैंने कहा एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इज percentage marks and then we stop. So we have taken care of the complete requirement. I think all the things have been taken care of. Have you understood this? बोलो जल्दी, समझ में आया है या नहीं है? डाउट है तो पूछो. और आया है तो हमें अपना एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है. सागर काय डाउट है? नाही सर काय नाही. Okay. Now that if you have understood what was the requirement over here, now I want you to go ahead with the previous problem once again. कौन सा था अपना? मैनेजर का था. Okay. तो ये exercise 1. So let's take this particular problem statement and I will share this problem statement with you all once again. ये 2 slides में आएगा. ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये आपका सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब जरा दिमाग पे जोर डालिएगा और with this additional knowledge that you have now, make an attempt to solve this question. This question was given to 2 parts. Have you all received the problem statement? 2 slides, yeah? Yes, sir. If you have received, I'll break you out of the rooms now. 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं and solve.
Okay, so rooms are open. Please proceed towards solving these examples. That I have given to you. The problem of this hotel management that has been given to you is not that complex. You all have started in the right way. I wonder why are you getting confused? You just have to proceed. Don't bother of the entire complexity of the problem. First, accept the data, then find their averages, and then find how many extra employees are required on average for that particular time. It's so very simple question. So I want you all, again, like what you did today, before the lecture, meet, and I want you to solve the problem under any circumstances. Because everything that is required to solve the problem, we have discussed. Now, there should not be any excuse why you are not in a position to solve the problem. And you are, some of you have thought and expressed it correctly. Some of you have thought correctly, discussed correctly, but what you are doing is not what you are discussing. That should never happen. You should always write the code that you are discussing. In one of the group, I realized you discussed right things, and what you are right means your discussion was correct, but what you are writing was not what you are discussing. That is the worst thing to happen. That should never happen. What you write, what you discuss. Correct? And don't look at the entire problem at one go, first time. Don't do that. Don't commit that mistake. Take it one thing, one step at a time. First, accepting the data, then finding the average, and then finding the number of employees. Then you can mix and match to reduce the size of the code. So I want you all to meet once again. Remember who your team members were. Meet before the lecture. Schedule a time. Yeah, early morning, that could be the fresh time. Okay, maybe 7 o'clock in the morning you meet. So definitely we'll solve if you can meet in the morning. Evening aate, you are tired, you don't like speaking. Today Aditya and Prithviraj, you are just not ready to speak. Okay, so subah ka time, after you have a good night's sleep, you will have that freshness of mind also. So decide, subah miloge, afternoon miloge, evening miloge, but make an attempt to solve that particular question. It's not that difficult question. सोने के पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, कभी कभार रात में नींद में भी आंसर आ जाता है. If you have a look at that, that's what my habit is. At times, if I'm troubled, I'll have a look at that question, then I go sleep, and automatically दिमाग काम करता है सोने का. And by morning we are ready with the answer. Okay, try that thing out, and I hope you get the solution tomorrow. So before the session, I want you all to meet and make a serious attempt to solve. And everybody should contribute. एक बंदे का काम नहीं. Everybody should contribute and be ready with the solution before the tomorrow session. So thank you all for attending the session today. सर Yes, please. तर ते ऍडिशनल एम्प्लॉईज 20 लागणार आहेत ना. Additional. ऍडिशनल प्रत्येक 20. 20 ऍडिशनल कस्टमर होतात. जेव्हा ते 20 ऍडिशनल कस्टमर झाले हा. ते कधी कळणार? ते म्हणजे कुठल्या लिमिट नंतर आता 100 ची कॅपॅसिटी. म्हणजे कॅपॅसिटी किती ते कळत नाही हॉटेलची. नाही हॉटेलची कॅपॅसिटी तुम्ही चिंता करू नका. दॅट हॉटेल हॅज लिमिटलेस कॅपॅसिटी. So don't bother about the maximum capacity of the hotel. The hotel manager says 1 lakh customer आए तो then also I'll put up the infrastructure. आप याद रखो, we require 1 additional employee for every 20 customers. वो याद रखो. ऍडिशनल आले तर Addition म्हणजे now that is a catch. Every 1 additional म्हणजे एक अजून एम्प्लॉय पाहिजे is required for each 20 customer. म्हणजे प्रत्येक 20 कस्टमरच्या मागे एक तुम्हाला अजून एम्प्लॉई पाहिजे. ओके, ऍडिशनल का म्हटलंय, द वर्ड ऍडिशनल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर प्रश्न नीट बघितला तर तुम्हाला त्या ऍडिशनलचा अर्थ कळेल. ओके, आई विल नॉट गिव अवे दैट आंसर, मैं नहीं बताऊंगा अभी, पर आप जरा क्वेश्चन ढंग से देखो, वहां उसका आंसर दिया गया है. एडिशनल का मतलब क्या है, यानी लेट मी नॉट टेल यू, आई वांट यू टू रीड द क्वेश्चन एंड फिगर आउट ये वर्ड एडिशनल क्या कह रहा है. Additional क्या कह रहा है. Okay, and if you don't figure out what that additional is, your answer will go wrong. So जरा डिस्कस करो ये एडिशनल क्या कह रहा है, बट उसके पहले डेटा एक्सेप्ट करो और कैलकुलेट करते समय डिस्कस करो कि एडिशनल का मतलब क्या रहेगा. So the word additional is very important.
for every 20 customers. Additional क्यों कहा गया है? ये आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया है. It's just like you have to read the entire statement again and again to find out. Okay, so पढ़ो. Understanding the customer's requirement is the very important aspect. Didn't we discuss that? Steps. Define the problem, understand the requirement, and then design the solution. तो पहला understand भी कर लो क्या है exactly, input क्या है, output क्या है, constraints क्या है, conditions क्या है, and identify all those conditions, and then set about writing the algorithm. Algorithm भी शुरू नहीं करना है write करने का जब तक you are not understood what exactly the problem is. तो कोशिश करो and be ready before the tomorrow session. So meet at least an hour or two before. 1 घंटा पहले मिलो before our session. Discuss it. रेडी रखो सोल्यूशन. जैसे आज कौस्तुभ ने सबमिट किए 1-2 सोल्यूशन, पहला वाला से सेकंड वाला बेहतर था एंड वी इंप्रूव ऑन दैट सोल्यूशन. हैव अ लुक एट दैट सोल्यूशन. आज जो हमने मिस लीला का जो प्रॉब्लम सॉल्व किया क्लासरूम का, वो भी देख के रखो सो दैट यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ द रोज एंड कॉलम्स आर टू बी हैंडल. उसकी भी यहाँ जरूरत पड़ेगी. ओके, तो चेक इट आउट, रीड द प्रॉब्लम दैट वी हैव सॉल्व्ड टुडे एंड बी रेडी फॉर टुमारो सेशन. So thank you all for attending the session today. Wish you all the very best to solve that problem. ये problem बहुत लंबा खींचा है. It shouldn't have taken so long, but I want you to solve. मैं आपसे solve करवा लूँगा ये problem. Okay, and there are few more such problems that I have identified for you, which will make you think. Problem simple होता है, crux identify करना जरूरी है. And once you identify that, then it's a cakewalk. आप problem पढ़ने के पहले solve करेगी जल्दबाजी कर रहे हो. Don't do that. Don't look at the entire problem at one time. Decompose. Solve one part of the problem at one time. Make it simple and then club those things to create a larger solution. So decomposition is a rule. याद रखो, decomposition था, pattern था, decomposition था. ये सारे जो concept हमने discuss किए वो apply करने का समय आ चुका है. We have finished with all the simple problems now. It's time for us to think, do something more serious stuff. Okay. So with that note, I stop today. See you tomorrow with the solution. Take care. Love you all. Bye-bye.